welcome to our podcast. It's been a while. काफी दिन से मैं पॉडकास्ट कर नहीं पाई, कुछ ना कुछ होता जाता था. You know how life is, it gets us busy at unexpected times. कभी फैमिली में कोई इवेंट हो जाता है, कभी काम इतना ज्यादा आ जाता है. But anyhow, now I'm trying to get myself on a routine. मेरी तबीयत भी काफी खराब रही काफी दिन, and then we relocated to a new house. तो you know, अब चेंज ऑफ वेदर है तो फिर तबीयत खराब होने लगी. बट I decided that no matter what, let me just get back on my podcast. It's been a very long time, and I'm sure most of you have been wondering कि क्या हो गया. But anyway, today's topic is पाकिस्तान में बढ़ते हुए divorce के cases. इनकी reason क्या है? काफी दिन पहले किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा था, and I had spoken about this. And you see, the thing is, there are a lot of reasons. ठीक है, और पहली बात तो ये कि divorce cases, it's not just in Pakistan, ठीक है, it is worldwide. I think generally the frequency of divorces has increased. Okay, it has a lot to do with the, I think, our socio political crisis, our lifestyle, our beliefs, the discipline we used to have, principles we used to have, our ancestors used to have. All these things have changed over the years. ठीक है, अगर आप कंपेयर करें आज से 40-50 साल पहले के जो लोग थे, उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती थी. ठीक है, दे हैड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनर, सेल्फ रिस्पेक्ट. अगर जबान दे दी तो दे दी, और कमिटमेंट करके पूरी करना. बट आजकल की जो लाइफस्टाइल है, आजकल के जो लोग हैं, दे हैव लॉस्ट दोज वैल्यूज. आई थिंक द मोस्ट important reason that is behind the cause, behind the increase in divorce cases, is because people have lost respect for life. ठीक है, मेरे ख्याल से जज्बातों की कदर नहीं है. आप अक्सर बहुत मेन एंड वुमेन, आदमी और दोनों के लिए मैं ये कह रही हूँ, लोगों को ये लगता है कि we don't owe anybody anything, so why should we like go the extra mile to do something good for the other person. हम किसी के लिए क्यों बेहतरी करें, हम अपना सोचें. सेल्फिशनेस बढ़ गई है. पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था. ठीक है, शादियों का मतलब ये होता था कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट रखना, एक दूसरे के लिए वेलबींग के लिए एहसास करना और ख्याल रखना. मोहब्बत जो एक दिल से एक सेंटिमेंट होती थी ना, वो पहले के जमाने में ज्यादा देखी जाती थी. अब मेरे ख्याल से लोग मतलबी भी ज्यादा हो गए. तो इवन दो दे हस्बैंड एंड वाइफ, इवन दो दे हैव बीन बेस्ट फ्रेंड्स ऑल देयर लाइव्स, एट सम पॉइंट बिकम सेल्फिश. सेल्फिशनेस आ जाती है. ठीक है, मेरे ख्याल से one of the reasons why divorce cases have increased generally worldwide is because humanity has changed. इंसान जो है ना, एहसास भूल चुका है. People have left, forgotten the concept of compassion for one another. They have forgotten how to love each other. And I think कि जो है ना, मेनली ये है कि अनकंडीशनल लव का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो खत्म हो चुका है दुनिया में. I grew up in a very healthy home. ठीक है, my parents were very loving people. I have seen and felt true love. ठीक है, जब तक मेरे अब्बू और अम्मी साथ थे, अब्बू को जन्नत नसीब करे अल्लाह ताला. अब्बू was a very very wonderful man, and the way he loved my mother, the way he cherished her, the way he valued her, everything she needed, everything he provided for her. एक दिल से उनको एहसास होता था. So when we grew up, we had the same mindset, the same concept. And when we look around us, sadly, we don't see that among our friends. They are all struggling with their marriages. People they are married to, our relatives have these kind of issues. Divorces हो जाती हैं unexpectedly. अच्छे चलते चलते कुछ हो जाता है. फिर I think social media has a very very major role to play in this also, because लोगों का दिमाग खराब हो गया है. I'm sorry to put it that way, but seriously, you see, they poison the minds of the youth. Social media पे ऐसी चीजें दिखती हैं जो western lifestyle होता है, western concept होता है. One person dating multiple people, one person engaging with the like un-Islamic things में पड़ जाते हैं, शराब पीना शुरू हो जाता है. तो वो देख के हमारी जो जवान population है, they're getting inspired. They try to follow those things. It's not part of our culture. पहली बात तो ये ना कि आपका जो culture है, आप उसको follow करो. उसकी आपकी जो religious values हैं, उसको follow करो. Religiously तो हमारी ये values नहीं है ना कि हम marriage को मजाक बना के चलें, या हम like disrespect में पड़ जाएं एक दूसरे के लिए, हलाल काम को भूल के हराम काम में पड़ जाएं. All these kind of things are affecting our society, and I think they play a very very important role in the in being the reason for the increase in divorce rates in our society.
एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया मैं ये कहूँगी कि जो है ना हमारे सोसाइटल इश्यूज भी बहुत हैं, हैव बीन पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी फॉर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ इयर्स. A sad reality is this वुमेन राइट्स का जो इशू है हमारे पास, ठीक है, जो कुछ बहुत गांव हैं पुराने, लो कैलिबर के लोग, लोअर सोसाइटीज के, जो हमारे मिडिल क्लास लोअर क्लास के जो लोग हैं, दे स्टिल काइंड ऑफ हैव दिस टेंडेंसी टू अब्यूज वुमेन्स राइट्स. ठीक है, तो वो प्रेस करते हैं, बीवियों को प्रेस करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज की तरफ चले जाते हैं. I don't say कि divorce is completely off the table, ठीक है, but when one feels abused emotionally and mentally, even Islamically, women have the right to ask for a way out, ठीक है, especially in the case of physical abuse. So, उस लेवल पर जानी नहीं चाहिए बात. लाइकवाइज कुछ औरतें होती हैं अपने हस्बैंड्स को इतना मैलट्रीट करती हैं, मेंटल अब्यूज करती हैं, इमोशनल अब्यूज करती हैं, एंड दे ऑल एंड अप suffering in silence. You don't have the option to suffer in silence. Islam gives you the option to get out of such abusive relationships and marriages. तो although divorces are looked down upon, हम बुरी नजर से देखते हैं divorce को, sometimes कुछ situations में जरूरी हो जाता है, so that is why I have this personal policy कि I don't make opinions about people or judge people or their actions or their decisions to seek a divorce, because I don't know what's going on in their personal life. ठीक है, what's going on behind the curtains मैं नहीं जानती. बट अगर कोई इस लेवल तक पुश हो गया है ना कि वो तलाक तलाक मांग रहा है, डिवोर्स कंसिडर कर रहा है, it means के things were beyond control, things had gotten to that point of no return. ठीक है, तो पहली बात तो ये ना कि एज अ हस्बैंड एंड एज अ वाइफ दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू नॉट लेट थिंग्स गेट टू दैट लेवल. लाइक एक दूसरे का एहसास करें, रिस्पेक्ट करें, और सोशल जो चीजें होती हैं ना, मूवीज दिख रही हैं, फेसबुक पे वेस्टर्न कल्चर दिख रहा है, आपकी इतनी सेंस ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेन और कंट्रोल होनी चाहिए कि यू शुड नो व्हेन दिस इज वेयर यू हैव टू ड्रॉ द लाइन. मतलब दिस इज नॉट पार्ट ऑफ माय कल्चर, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ माय मोरल वैल्यूज, आई वाज नॉट रेज्ड टू बी लाइक दिस. मैं अंग्रेज नहीं हूँ, मैं उन लोगों की तरह नहीं जी सकता या जी सकती. इस्लामिकली क्या सही है क्या गलत है, इन बातों को जरा सोचे, हर एक सोचे. इट्स एवरीबॉडीज ड्यूटी टुवर्ड्स ईच अदर एज अ कपल. एंड ठीक है, लाइक डिसएग्रीमेंट्स आती हैं, देयर आर प्रॉब्लम्स. You are two separate individuals. You can't agree on everything all the time. So what do you do in that case? Try to create an atmosphere जहाँ आप दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त कर सके. It's not supposed to be कि one person should bend for the other all the time. It should be a mutual thing. दोनों तरफ से agreements होनी चाहिए. कभी आप इधर झुक जाओ, कभी वो उधर झुक जाएगा. इस तरह से अगर आप इतने stubborn हो गए कि neither of you wants to bend over to please the other in a marriage, it's not going to work. तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. और ये सारी टीचिंग्स आई थिंक अनदर फैक्टर इज पेरेंटिंग. ठीक है, in my opinion, and we have talked about this in one of our past podcasts, कि जो है ना, parenting has failed over the past decades. We have become more Western in the sense that we don't want to hit our kids, we don't want to discipline them, we feel that we should just talk to them. But you see, although I'm not encouraging abuse, physical abuse on kids, okay, but to some extent parents need to be a bit firm with their kids. कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जब एक झापड़ तो पड़ना चाहिए. ठीक है, तभी बच्चों को समझ आती है बात. अगर हम अंग्रेजों की तरह बड़ा करेंगे ना बच्चे, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन अंग्रेज होंगी. मतलब वी विल ऑल्सो रेज किड्स दैट आर नॉट अवेयर अबाउट इस्लामिक वैल्यूज. And I'm talking like this because I'm considering the entire nation and all my listeners to be part of an Islamic community. Pakistan is an Islamic Jamhuriyat, so we have to realize these kind of things कि हम लोगों को अल्लाह का मैसेज हमारी जनरेशन को देना है, हमारी बाद वाली जनरेशन को देना है, उनके बाद वाली जनरेशन के लिए भी कुछ होके जाना है. So why not start with good moral values? Why not start with good Islamic teachings right from the house? तो और घर के माहौल में ही जब मसला होगा, जब kids grow up seeing their parents abusing each other, beating each other, maltreating each other, fathers not giving their wives the due respect they should Islamically and religion, marital rights wise. So what do you expect those human beings to grow older and become? They become a mirror reflection of such parents. So it becomes a cycle. You're passing on teachings that will spoil the next marriage, the next generations of your family. So as an individual, हम सबकी responsibility होती है कि we should set good examples in our marital lives for our children and their children and their children and their children.
तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूंगी कि हमारे पास डाइवोर्स रेट्स इसीलिए बढ़ चुके हैं बिकॉज वी हैव ऑल फॉरगॉटन आवर इस्लामिक वैल्यूज. ठीक है, मोस्ट ऑफ अस आर नॉट इवन प्रैक्टिसिंग इस्लाम द राइट वे. If you practice Islam properly, you respect your wives, you respect your husbands, you fulfill your duties properly as husbands and wives, divorce rates do not happen. ठीक है. और इसी तरह से इसी बात को लेके then we should come down to the concept of arranged and love marriages. You see हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा बन के रह गई है love marriage. Why? Islam does not say women don't have the right to love someone. Islam doesn't say a man doesn't have the right to choose his wife. Why do we in our Pakistani community make arranged marriages the only way forward? Why are parents so upright and so stubborn about accepting the fact that their children can like someone? I don't understand that. हाँ ठीक है पसंद करो लेकिन वही बात आ जाती है ना. डोंट गो इनटू द वेस्टर्न वे ऑफ डूइंग थिंग्स. डू इट इन अ लीगल इन अ रिस्पेक्टफुल वे. You don't need to go on dates with someone. You don't need to sleep with each other before marriage. You don't need to go into anything haram. You can admire someone from a distance. You can associate with them within the limits of Islamic barriers, with respect, with honor. Keep your eyes down. Don't abuse each other sexually or physically. You don't need to come into physical contact with each other. Love each other in a very special way. Spiritual love is something that is real. And it only comes when you respect each other and you respect the distance that is due on both of you because you're not married. You socialize, you interact, you share opinions, you talk, okay? But refrain from wrong activities. And you see, another thing is in our society that has been affecting the youth is intimate relations online, intimate relations behind closed doors, which is illegal and haram. If you think that establishing those relations will guarantee you're marrying each other, it doesn't work like that. You would only reach a point where you lose self-respect for yourself, respect for each other, and you're just spoiling yourself for no reason. You're going to lose the trust of your husband when in future, if he's not the guy you marry, or if you're or as a woman you will lose respect for the husband if you later find out he was engaged in this kind of thing with someone else. So what are you doing? What is our society doing? मतलब इतनी गंदगी फैल रही है तो हमारी सोसाइटी में तो फिर डाइवोर्स रेट बढ़ने वाले हैं ना, क्योंकि आप शुरू से एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे बिकॉज यू नो योर सेल्फ दैट यू हैव अ वीकनेस इन यू. तो वही बात होती है ना कि पहले आप अपने गिरेबान में तो झांक लो ना दूसरों को जज करने से पहले. हमारे आदमी ऐसे नहीं होते हैं. दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू बिफोर मैरिज. दे कैन इवन व्हाइल मैरिड, बट द मोमेंट दे हियर देयर वाइफ स्पोक टू अ स्ट्रेंजर, इशू बन जाता है. ठीक है, तो भाई आपने पहले खुद तो ऐसी हरकतें करी ना, तो आप अपनी वाइफ पे क्या इम्पोज कर रहे हैं? तो भाई करो ही नहीं ऐसी हरकत. पहली बात तो ये ना कि हमारी वी शुड ऑल स्टार्ट फ्रॉम अ क्लीन स्लेट. वी शुड स्टॉप वेस्टर्न वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. इट्स रॉन्ग. फॉलो योर इस्लामिक टीचिंग्स एंड पेरेंट्स शुड इवन गाइड देयर चिल्ड्रन कि भाई बी गुड मुस्लिम्स, फॉलो द राइट इस्लामिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स. ठीक है, पसंद करो बट अपने हदूद में रख के करो ना. हदों में रहो एंड डोंट डू एनीथिंग दैट इज अनइस्लामिक बेसिकली. इसी तरह ट्रस्ट बिल्ड होगा. ठीक है, ठीक है, अल्लाह ताला रिश्ते बनाता है. समटाइम्स इट डजंट वर्क आउट. फॉलो योर पेरेंट्स एडवाइस. आइडियली तो ये होता है ना कि वो पेरेंट्स नो बेटर देन us as kids because as young children definitely don't know what is good for them. Listen to your parents. But अगर आपकी एक एज हो चुकी है, आप 28 20 30 के हो चुके हैं, when you're in that later 20s and early 30s की एज और आपकी शादी नहीं हुई है, by then you are mature enough to make your decision yourself. तो आप अपने पेरेंट्स को बताएं कि भाई मुझे ये पसंद है because I met this person, I've spoken to this person and we kept it in decent limits. We were never physical or anything and I respect her, he respects me. We want to get married. तो आपके पेरेंट्स भी will listen to you and take you seriously. ठीक है, जवान बच्चे उल्टी सीधी हरकतों में पड़ जाते हैं, फिर पेरेंट्स से छुप छुपा के गलत काम कर बैठते हैं, फिर शादी के बाद उसके हस्बैंड को या बीवी को पता चलता है, वहीं ट्रस्ट खत्म हो जाता है, इश्यूज कॉम्प्लिकेशंस बन जाती हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. तो आई थिंक ऑल दिस सम्स इट अप कि हमारी सोसाइटी में डाइवोर्स क्यों है इतने ज्यादा नंबर्स में क्यों बढ़ता जा रहा है. एंड नॉट ओनली इन आवर सोसाइटी, इट्स वर्ल्ड वाइड सेम इश्यूज हो जगह. ठीक है, so I hope I answered your question and I hope you can share this message with other listeners and the youth generally that we should have better lives in future. We should have a better future for our youth, decent, respectable, happier marriages, and parents should open their mind towards allowing their kids to choose their life partners. ठीक है, पाकिस्तान में इतना होना चाहिए मेच्योरिटी, इतनी openness होनी चाहिए माइंड में हमारे कि it is not an un-Islamic thing to let people choose their life partners. It's good. और अगर पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें, उनको समझें, उनको
like ये मौका दें तो why not, their kids will be happy as parents, your kids will be happy. तो पेरेंट्स की भी ड्यूटी होती है कि भाई आप अपने बच्चों को समझें, उनकी खुशी देखें, उनको क्या चाहिए, जिंदगी उनको गुजारनी है उस बंदे या बंदी के साथ. तो why you making it so difficult for your kids and forcing them into something they don't want to go ahead with? आउटकम तो फिर यही होगा ना. तो पेरेंट्स के लिए भी मैं ये रिक्वेस्ट और अपील करूंगी कि प्लीज ओपन योर माइंड टुवर्ड्स लाइक लव मैरिजेस, encourage your kids to choose their life partners and be fair to them. So, well, I think I'll end the podcast here today, and I look forward to hearing from all of you guys in the comments below. Do share your opinions as well. Okay, bye.